Now we will start with the estrous cycle. So estrous cycle is very is the same as the menstrual cycle, and the mammals other than primates, they don't basically they don't menstruate, but rather they go to the estrous cycle. Estrous is known as the period of the heat. तो ये कैसे जो प्राइमेट्स हैं मैमल्स में उनमें ये होता है, और ये सेक्सुअल साइकिल होता है, बिकॉज इसमें जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी फॉर द मेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कहाँ होता है, ये फीमेल्स में होता है, नॉन प्राइमेट फीमेल्स. द नेक्स्ट इज and their cycle is called estrous cycle. This is a conspicuous period of heat. Estrous at the time of ovulation. The time during which the sexual interest of female is aroused. ये एक मैमल्स जो कि अदर देन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ये होता है, और देयर सेक्सुअल साइकिल इज नोन एज द ईस्ट्रल साइकिल. ये कॉन्स्पिकुअस पीरियड ऑफ हीट होता है, उसको कहते हैं ईस्ट्रस. And at the time of ovulation, the time during which the sexual interest of the females is aroused. मतलब the females are more receptive towards the males. तो इसमें कौन कौन से stages होते हैं? Stages of estrous cycle. पहला है प्रोईस्ट्रस. This is the first stage. There is development of both endometrium and ovarian follicle. तो ये पहला स्टेज है जिसको कहते हैं प्रोस्ट्रेस स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है कि डेवलपमेंट, ये प्रोस्ट्रेस स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है. इसमें डेवलपमेंट ऑफ बोथ एंडोमेट्रियम एंड ओवेरियन फॉलिकल इज प्रेजेंट. द नेक्स्ट इज
इसमें कैसे सेल्स होते हैं, तो हम सेल्स की बात करेंगे। तो इसके जो सेल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। These are large number of non-cornified nucleated epithelial cells। तो ये इसके जो सेल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, ऐसे होते हैं, कॉर्निफाइड सेल्स, मतलब नॉन कॉर्निफाइड सेल्स, न्यूक्लिएटेड और एपिथेलियल सेल्स। इस फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम और ओवेरियन फॉलिकल इन दोनों का डेवलपमेंट होता है। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट इसलिए होता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो इम्प्लांटेशन के लिए, और ओवेरियन फॉलिकल का इसलिए होता है कि न्यू ओवेरियन फॉलिकल से फिर ग्राफिन फॉलिकल बने और ओव्यूलेशन। द नेक्स्ट स्टेज, the next stage is estrous. The spelling is different between estrous cycle. This is estrous cycle. This is the second stage in estrous cycle. In this phase, receptivity to a male and to mating heat or in heat, pheromones secreted only at this stage of cycle। थर्ड, और इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉर्निफाइड epithelial cells and ovulation occurs। नेक्स्ट साइकिल है उसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। And this is the second stage of the estrous cycle. The receptivity to a male and to the mating heat or in heat, मतलब मेल की जो रिसेप्टिविटी है और इस टाइम पे मेटिंग होता है। जो फेरोमोन्स हैं वो इसी स्टेज में सिक्रीट होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स आर द केमिकल्स और द हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द एनिमल्स फ्रॉम देयर आउटसाइड देयर बॉडी, and these acts as a external cues or the external signal for the arousal of the sexual cycle। इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्निफाइड एपिथेलियल्स होते हैं। पहले क्या हमने देखा था, दीज आर न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल नॉन कॉर्निफाइड। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉर्निफाइड एपिथेलियल सेल्स, और ओवल्यूशन हो रहा है इस टाइम पे, ओवल्यूशन। द नेक्स्ट इज मेटास्ट्रस, थर्ड स्टेज।
third stage in estrous cycle immediately before diestress. इस फेज में क्या होता है? सेक्सुअल इनएक्टिविटी, मतलब अब सेक्सुअली वो इनएक्टिव है. एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है. ल्यूकोसाइट्स, अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो यहाँ के जो सेल्स है इस फेज के, दे आर leukocytes among cornified epithelial cells. The third stage in the estrous cycle immediately before the digestion. इसमें क्या होता है? सेक्सुअल इनएक्टिविटी होती है, मतलब अब सेक्सुअली ये इनएक्टिव हो जाते हैं और कॉर्पस लूटियम का सिक्रीशन शुरू हो जाता है एंड कॉर्पस लूटियम बनना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम. अब इसमें इस सेल्स के छोटे छोटे ल्यूकोसाइट सेल्स भी दिखने लगते हैं एंड दीज ल्यूकोसाइट्स appear between the cornified epithelial cells. The next is diestress. Last stage in estrous cycle. They are functional corpus luteum. And an increase in blood concentration of progesterone. तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? So there is leukocytes and epithelial cells. तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो दिस इज लाइक
and then so this is the ovulation. Ovulation occurs during the estrous cycle. This is proestrous. This is diestrous. This is metastrous. And this is proestrous. And this is the estrous cycle. So thus we can say that this is the time of the ovulation, and this is the estrus where the basically the ovulation takes place. So we have the first stage, this is proestrus, where there is lining of the endometrium ovulation, a large number of cornified and nucleated epithelial cells grow. The next is estrus. This is the second stage in the estrus cycle, receptivity to the male and mating heat or in the hay. Pheromones, they secrete the pheromones only at the stage of this cycle. The cell type, these are the cornified epithelials, and exactly the ovulation takes place here. So you have to remember this, ovulation takes place in this estrus cycle. The next is the metaestrus. Metaestrus is basically the third cycle where there is fertilization is already happened, and then now the female is no more receptive towards the male, and this is the period of sexual inactivity, and then the corpus luteum is formed. Diestrus, this is the last stage of the estrous cycle, and in this stage the leukocytes is also appeared in the cornified cells. This is the last stage, and this is the functional corpus luteum is formed because the fertilization has increased, and increase in basically the is formed, and increase of the progesterone, the concentration of, because the fertilization has already happened. The cells which are present during this stage are leukocytes and epithelial cells. So the next stage is diestrus, proestrus, the ovulation occurs. This is the estrus, proestrus, estrus, metaestrus and diestrus. Thus this estrus cycle is finished.